हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू मम्मी द ढाबा। आप लोग जो है, आपका स्वागत है मम्मी द ढाबा में। यू आर वेलकम टू माय चैनल। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू मेक समथिंग स्वीट without cooking, which will be made within 5 minutes, which is loved by one and all, which is very easy. And ये सारी सामग्री, whatever ingredients we're going to take, they're all available in the house. So first let's see what we're going to make today. Today we're going to make cream biscuit. Now what all do we need for that? First of all, we need sugar, we need cream, whether it's home cream from your milk or it's cream from the market, and we need biscuits, which are the Mary biscuits. Basically, they are neither salty, neither sweet. Now, first of all, what we will do is we'll whip our cream by a whipper, or you can do it by a blender. But I don't want it to be very fluffy, so I'll mix it with a hand mixer like this. And while mixing it, we'll add our sugar according to your taste. If you eat less sugar, you add less. If you eat more, you like more sweet, you can put it according to your taste. As soon as this cream gets whipped, ये मलाई जैसी जैसी हमारी खुल जाएगी, हमें इसको बिस्कुट के साथ में डालना है। तब तक चीनी भी इसके साथ घुलता रहेगा। ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कोई कुकिंग नहीं इन्वॉल्व है। ये कभी भी बन सकता है, फॉर अ पार्टी, फॉर चिल्ड्रेन, फॉर एल्डर्स, फॉर अ गेस्ट हु इज़ अनएक्सपेक्टेड हु हैज़ कम टू योर हाउस। कि कोई भी जो हो, who has come and you need to make a sweet dish in a jiffy and you don't have a sweet shop or you don't have time to cook or bake something. So see, now our granules of sugar are all, they have come down and they have all mixed up nicely with the cream. अब हमारी चीनी जो है घुल गई है। अब देखिए ये बहुत अच्छे से बन गया। हमें बिल्कुल फ्लफ़ी नहीं चाहिए जैसे केक वगैरह के लिए, इसलिए ब्लेंडर नहीं यूज़ किया है। अब विल टेक अनदर बाउल। अब हम दूसरा बाउल लेंगे, उसमें अपने बिस्किट्स को हम लगाएंगे इस तरह से करके। We'll just slide them and keep them next to each other. You can break them into half also if you want, so that you feel that you're filling up all the gaps here. But the cream will anyway fill up all the gaps. So you just have to put this, and after this we'll pour the whipped cream into this. For more taste or more flavor, or for more like children like taste, you can put chocolate pieces, you can put chocolate sauce, anything else you can add to this cream, but I'm making the basic one. You can add anything. After this you just supposed to pour all the cream. इसके अंदर आप सारा क्रीम को pour कर दीजिएगा और सब चीज़ इसमें बिस्किट सारे आपके डिप हो जाएं। जब ये सारे डिप हो जाते हैं, आफ्टर दैट वील टेक इट टू द फ्रिज। अब इसको हम फ्रिज में डालेंगे सेट होने के लिए। 2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखिएगा। उसके बाद जो है यू कैन टेक इट आउट and enjoy it, and your kids can enjoy it, your guests can enjoy it. So now I'll be taking it and keeping in the refrigerator. Now I'll keep it in my fridge and I'll leave it for 2-3 hours in the fridge for cooling and setting. So now I've left it in the fridge and now we'll take it out after 2 to 3 hours. अब देखिए हम इसको फ्रिज से निकाल लाए हैं और हमारा देखिए कितने अच्छे से ये जम गया है। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से जम गया है। अब बिल्कुल हमारा स्वीट डिश जो है रेडी हो गया। देखिए कितने अच्छे से इट हैज़ बिकम सेट। इट हैज़ सेट वेरी नाइसली। नाउ आवर स्वीट डिश इज़ रेडी टू ईट। सो नाउ आई विल टेक माई स्पून एंड आई विल ब्रेक इट लाइक दिस and see, it's all ready to eat. It's so tasty, so lovely, and it's looking so nice, so delicious. You can add chocolate sauce, chocolate chunks, chocolate chips, whatever you want. जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहे और ऐड कर सकते हैं और इसको खाइए। और बच्चों का तो भाई वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी। Children love it and elders also love it because it's very soft and the biscuits are there which are make it healthy also. So here's your sweet dish which is made very quickly and ready for party time, kids time, and any unexpected guest in your house. You can give them a delicious sweet dish to finish off your lovely dinner.